Hello students, welcome back. I'm your English teacher Muhammad Wakas. Students, as you know very well, it has become extremely necessary for people to talk on phone, especially when you are working for a company or you're working in office where you have to talk to someone on phone. So what sentences or phrases you are gonna use? You need to know about it. So in this video, I'm gonna be teaching you some interesting phrases that you can use in order to make your English fluent. So let's get started. One thing you need to keep in your mind that the first thing you do is to make contact. When you call someone, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? Connection create करते हो. Suppose you call someone and that is you are actually trying to create some connection. So what are the phrases that you are gonna use जब आप किसी को कॉल करते हो? तो सबसे पहले हमारे पास है I would like to speak to. Okay, when you call someone, suppose you call in a company and there is a friend जो उसका नाम आसिम है, वो वहाँ पे काम कर रहा है, तो आप कॉल करके ये कहते हो कि मैं आसिम से बात करना चाहूँगा. I would like to talk to Mr. Asim. So the first thing that you do when you call someone is you use this phrase, I would like to speak to Mr. Asim. So this is the first phrase when you call someone, okay? Okay. The next phrase I have got for you is I'm calling from. Okay. This is another important thing. When you call someone, you will have to give some information that where are you calling from. ये बहुत important चीज़ है. जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आप उसको बताते हैं कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं. तो आप ये कहेंगे Well, I am calling from a company. Here you will have to give some information about कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं. Okay. The next phrase that I have got for you is I am speaking on behalf of. Imagine that you are sitting in your office. You suddenly receive a call from someone and that person wants to talk to his best friend. तो वो आपका colleague है, वो बात नहीं कर सकता. Okay? तो आप उसके दोस्त से बात करते हैं. तो अगर कोई इंफॉर्मेशन वगैरह उसे चाहिए तो आप उसे कहेंगे आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ. तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूं. सो दिस फ्रेज कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू टेल द अदर पर्सन कि आप उसकी तरफ से बोल रहे हैं. ओके, सो दीज आर द फ्रेजेस you will use when you will make a connection, when you will make a call. Okay. The next one that I've got for you, you receive a call. Now you will have to respond to other person. तो अगर आप किसी कॉल को लेने के बाद आप किसी से पूछते हो कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, तो आप ये दो फ्रेजेस हैं जो आप यूज करेंगे. ओके, द फर्स्ट वन, how can I help you? This is the most common phrase which is used by everyone. जब भी आपको कॉल आती है तो आप आगे वाले से क्या पूछते हो? How can I help you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ओके, सो आप उन्हें क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप कॉल लेते हैं, तो आप उनसे यही पूछते हैं How may I help you? ओके, the next one, where are you calling from? You have picked up a call. You don't know about the person. You want to gather some information. So how will you be able to gather the information? You will simply ask, where are you calling from? तो आप आगे वाले बंदे से ये पूछोगे कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हो. So then that person will tell you further information. So ये दो phrases हैं, आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकती हैं जब आप कॉल को लेती हैं. So we have got more phrases for you in order to make your English better. So let's have a look at those other phrases. Suppose that you call someone, the other person is busy. He is not in a situation to talk to you. तो वो कौन से phrases हैं जो आपके लिए वो इस्तेमाल करेगा ये बताने के लिए
कि होल्ड ऑन, थोड़ी देर इंतजार करो. सो द फर्स्ट वन आई हैव गॉट फॉर यू, जस्ट अ मोमेंट प्लीज. You call someone, that person is not able to talk to you, so he will say to you, just a moment please. सिर्फ थोड़ी देर आप इंतजार करें. You can use this. Okay, so the next one I have got for you is, could you please hold on? This is really a polite way. ये बहुत ज़्यादा एक polite way है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो आगे वाले को बताने के लिए कि आप थोड़ी देर इंतज़ार करें. आपने मुझे कॉल किया है बट मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूं कि आपसे बात करूं, तो थोड़ी देर लाइन पर रहिए. ओके, हैंग ऑन प्लीज. यू कैन नॉट यूज दिस फ्रेज with your boss in professional life. You cannot use this phrase in professional life. You cannot use this phrase when your teachers call you or your boss calls you to get some information. You cannot say to your boss, hang on. No. You have to avoid using it. So where you use, if you want to say this to your friend, अगर आप अपने दोस्त को कहना चाहते हैं कि hang on, so there you can use this phrase, hang on. Okay. Not all the time you end up giving positive information. जब भी आपको कोई कॉल करे तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दो. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ जाती है. तो वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं जब आप किसी को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप ये सारे के सारे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन आई हैव गॉट फॉर यू इज, I'm afraid he is not in my office. You call your friend, you want to talk to him. The receiver says to you, well, the person you want to talk is not in the office at the moment. I'm sorry. Okay, I'm afraid he is not in my office. Okay, I'm sorry, he is in the meeting. The person you want to talk is in the meeting, is busy doing the meeting. तो the receiver will apologize to you. वो आपसे सॉरी करेगा. वो सॉरी करके आपको क्या कहेगा? I'm sorry, he is in the meeting at the moment, so there is no possibility to talk to him. So he being polite. So when you want to become polite and you want to say sorry, you want to give him some information that he is in the meeting, you can use this. I'm afraid you have got the wrong number. Suppose you are doing your work. Suddenly you receive a call. Hello? Who is there? You don't know the person. Will you become so rude to him? Why did you call me? This is the wrong number. Will you become like that? Will you say such kind of words to that person who has called you unconsciously? No, you don't have to be mean. You will use this phrase. If someone called you mistakenly, you will say, I'm afraid you have got the wrong number. You don't have to be impolite. Negative information doesn't really mean that you are giving the information which other person does not like. We add some more phrases which I have got for you. At times we have to face a lot of problems due to network issues, and there might be some other reasons. So when you call someone but आपको उसकी आवाज़ नहीं आ रही तो आप क्या करोगे? आप ये कहोगे hello, 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 hello. So you will end up your conversation. No, आप ये नहीं कहेंगे, बल्कि आप इनमें से कोई एक फ्रेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको आगे वाले की समझ नहीं आ रही. देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू नेटवर्क कनेक्शन, यू आर अनेबल टू लिसन कि आगे वाला क्या कह रहा है. सो द फर्स्ट वन आई हैव गॉट फॉर यू इज, योर वॉइस इज क्रैकिंग और jarring. Your voice is cracking, jarring. That means your voice is coming in a lot of pieces. So जब ये इतने सारे टुकड़ों में बट के आपके पास आवाज़ आ रही है तो आपको क्या समझ आएगी? You will not understand anything. So आप इस फ्रेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये थोड़ा इनफॉर्मल है. आप इसे कभी भी प्रोफेशनल वे में या फॉर्मल वे में आप इस फ्रेज़ को इस्तेमाल
नहीं करेंगे. So that means you are unable to understand what the other person is talking about. Okay. This is another phrase which you can use. But याद रखिएगा इसमें और इसमें फ़र्क ये है. The line is very busy. Okay, this can be used when you are talking to your boss, your teacher. In short, when you can use this phrase in professional life. You cannot. This phrase can only be used in professional field. So when you talk to someone you are unable to understand, you will say, well, could you please repeat what you said? We are unable to understand. Okay. The next one I have got for you is, I'm afraid I cannot hear you. So आपको आगे वाले की आवाज़ तब नहीं आती या आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. So it all happens due to network connection. So these are the phrases that you can use जब आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से या नेटवर्क कनेक्शन की वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आप ये तीनों phrases इस्तेमाल कर सकते हैं. So now it is the time to end up your phone call. So आप अपने phone call को कैसे end करोगे? There must be a proper way. So you will leave a message. Suppose कि आपने किसी को कॉल की, okay, तो आपकी बात उस शख्स से नहीं हो जिससे आप बात करना चाहते हो, तो आगे वाला जो रिसीवर है, the receiver will ask you, would you like to leave a message? Would you like to receive a message? क्या आप कोई मैसेज उस बंदे के लिए छोड़ना चाहेंगे? So this can be used when the receiver wants to know or wants to get to know. आया कि आप उसके लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हैं, या वो रिसीवर ये भी कह सकता है, can I pen down a message? So that means that if you have got any message for that person with whom you wanted to talk, so that person can say these two phrases. Remember, these two phrases can only be used when you could not talk to the person you wanted. जिस बंदे से आप बात करना चाहते थे आपकी बात उस शख्स से नहीं हुई तो आप ये दो phrases, जो रिसीवर है वो ये दो phrases इस्तेमाल करेगा. लेकिन अगर कॉलर ये कहना चाहता है, अगर कॉलर चाहता है कि वो इस तरह की कोई बात करे तो वो भी ये phrases इस्तेमाल कर सकता है. Well, I would like to leave a message, or can I pen down a message? So these phrases can also be used by a caller. So I hope कि आपने इन तमाम phrases को जब आप फ़ोन कॉल करते हैं या आपको कोई इश्यूज़ हो जाते हैं तो आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है और एंडिंग कैसे करनी है, इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा. और always try to be polite when you are talking to someone, when you are responding to someone on phone call. I hope these phrases are really gonna help you improve your speaking. So this brings me to the end of this lecture, and do not forget to subscribe my YouTube channel ताकि आपको इस तरह की daily informative videos receive होती रहें. I'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.